Hello, friends. Welcome to this episode of Being Sahaj Yogi. I'm Aparna Ganguly. I'm from Kolkata, and today we have with us another Sahaj Yogini from Kolkata, Mrs. Jyoti Thakur. Welcome to you, Mrs. Jyoti Thakur ji. Namaste. Welcome. And she is a homemaker and mother, and a very active Sahaj Yogini. She is often seen making public programs and giving realization. Online also you are doing, right? Yes. Okay, yeah. So welcome to the show. And basically what we want to know is how a person becomes a seeker. In a sense that I would like to know your pre-Sahaj days. What were the trigger points that made you into made you a seeker? In a sense that why would you embark on a spiritual journey at all? Because अभी कलयुग चल रहा है and हम लोग सब अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं. Basically most of us अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं हम लोग, प्लस नकारात्मक शक्तियों से जूझ रहे हैं हम लोग. तो ऐसे में आध्यात्म तरफ अग्रसर होना ये बहुत बड़ी बात है. बिकॉज हम लोग बेसिकली इस अंधेरे को काट के छाट के नकारात्मक शक्तियों को दमन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं. Right? That is what spirituality is all about. So basically, what I want to know is your pre-Sahaj days, the trigger point Sahaj happens to you, and what happens after Sahaj. In a sense, what established your faith in Sahaj, right? So over to you. I will give the stage. The stage is all yours. I will not interrupt at all. ठीक है? Over to you. Okay. Jai Shri Mata Ji. And thank you, Aparna Di, for giving me this opportunity to share my spiritual journey with the viewers, with my friends. Well, to start with, from a very, very small age, my very young age, when मैं जब बहुत छोटी सी थी. अच्छा, by the way, मैं English, हिंदी दोनों में बोल सकती हूँ या फिर सिर्फ English में बोलना है? What you say? आप हिंग्लिश में बोलिए, हिंदी इंग्लिश मिश्रित करके बोलिए. अपने प्यारे भारतवासियों के लिए बना रहे हैं. पहले चैरिटी बिगिंस एट होम. हिंदी इंग्लिश हम सबको समझ में आता है. सो प्लीज प्रोसीड. ओके फाइन, थैंक यू. तो मैं जब बहुत छोटी सी थी, when I was a little child, I always have this question in my mind, what is God? भगवान क्या है? तो मेरे मम्मी पापा बड़े भैया सब कोई मुझे एक ही चीज बोलते थे, ये देखो ये राम जी हैं, ये शिव जी हैं, ये हनुमान जी हैं, बस इनकी पूजा करो एंड दैट्स इट. वही है, वही देख देख कर अब उनसे दे ऑल्सो वे वेरी लिमिटेड विद द नॉलेज. तो मैं भी बस उन्हीं को फॉलो करती गई बचपन में and पूजा करती रही. we belong to a very religious very मतलब पूजा पाठ वाला family types. मेरी मम्मी भी वैसी ही हैं बिल्कुल. तो वो करती गई, फिर बड़ी हो गई and उसके बाद में after my studies I switched over to job. I worked for 15 years in IT industry. Then I happened to get married and by God's blessing मेरे हस्बैंड भी काफी रिलीजियस हैं एंड बाकी हमारा कुछ मिले ना मिले, लेकिन इस जगह पे हमारा काफी मिलता है. वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल. एंड उसके तो हमारी वो मतलब मेरी जो क्वेश्चन था, उसके बाद में मैं मम्मी बन गई. आई वॉज ब्लेस्ड विद अ डॉटर which she made me a proud mother. She'd always made me a proud mother. And but the question in my mind was always knocking, what is God? मेरे घर में I do everything I used to do. Like अगर पूर्णिमा है तो सत्यनारायण की कथा करनी है, भाई वो भी कर लिया. एकादशी कर ली, अमावस्या की पूजा कर ली, and starting from Shiv Ji's photograph to Shirdi Sai Baba's photograph, I had all the photographs in my mandir. So there was nothing that was not there with me. So I've done everything. लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये सवाल हमेशा ही रहता था कि क्या यही है कि हम बैठ के पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भगवान को भोग चढ़ा देते हैं एंड उसके बाद में हमें जो मन्नतें मांगनी होती है वो मांगते हैं एंड ठीक है वो आगे पीछे करके हो जाती है पूरी. बट इज दिस द एंड? क्या यही है?
मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था, you know, I was not very satisfied. But then one day, fine morning, my hubby came home, and he came with a photograph of Shri Mataji. And वो मेरे को बोले आके कि ये फोटोग्राफ है, इसको रखो, एंड अच्छा है, इनको रखना अच्छा है घर पे. So I said ठीक है, no issues. So I kept Shri Mataji's photograph, Shri Mataji Nirmala Devi's photograph in my house. And it was that morning which actually changed my whole life, what I am today. The moment I kept the photograph, I was finding myself, you know, a different kind of एक अंदर की एक फीलिंग बदल रही थी. एक खुद को ऐसे लग रहा था जैसे एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर घर में बन गया है, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, you know, something like thing. I felt like, you know, just sit in front of the photograph, just look at Shri Mataji and just sit with her. But क्या करना है, क्या नहीं करना है, तब भी कुछ भी नहीं पता था, बिकॉज मेरे हस्बैंड ऐसे भी बहुत कम बात करते हैं, तो ही डिड नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग टू मी एट दैट पॉइंट. सो आई ऑल्सो डिडंट आस्क हिम एनीथिंग. फिर मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने जाके यूट्यूब में आई जस्ट सर्च्ड फॉर हर, एंड आई फाउंड श्री माता जी's few भजन्स, you know. उसमें से एक भजन था अन्यथा शरणम करके, एक भजन है श्री माता जी का, which actually changed my whole thought process. That bhajan, I will just tell you in very brief, that it says that, you know, whatever you are, whatever you have been in past, in present, in future, whatever you are, you just surrender to me. आप मुझे खुद को समर्पित करो. And you know, it is such beautiful wordings it has. I won't be telling you now. इनफैक्ट अगर कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर सुनना. वो सुनने के बाद मेरी एक आस्था, एक कनेक्शन उनके साथ अपने आप ही डेवलप हो गया. एंड यू नो, तब तक मैंने हमारी जो एक फर्स्ट स्टेप होता है टू कमिंग इनटू सहज योगा इज दैट यू फर्स्ट टेक योर सेल्फ रियलाइजेशन. That is, self-realization basically means to know your own self. So I didn't even take that. इसको हिंदी में आत्म साक्षात्कार बोलते हैं. मैंने वो भी नहीं लिया था. I was nothing. मैं इसमें कुछ नहीं जानती थी. बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये ही शायद मैं खोज रही थी. बिकॉज मुझे एक अंदर में एक पॉजिटिवनेस, एक शांति, एक पीस. I started feeling a peace, inner peace in my mind, inner peace in my heart. I was feeling very content कि नहीं, बस मेरी खोज जो थी वो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे आकर खत्म होती है. एंड उसके बाद में आई वेंट टू टेक माई सेल्फ रियलाइजेशन. हमारे बहुत से सेंटर्स हैं. आई एम फ्रॉम कलकत्ता, सो हमारे बहुत सेंटर्स हैं. आई वेंट अप देयर, आई टुक माई सेल्फ रियलाइजेशन, एंड उसके बाद में माई जर्नी स्टार्टेड विद सहज योगा. And what I am today, I can tell you with my own experience, is that, you know, I will not say that आप बहुत कुछ जिंदगी में बन जाते हो. You earn power, money, fame. These are all materialistic things in life, you know. But what you get is that complete peace, complete satisfaction, because your end of the day, basically we all are spirits, you know. हम सिर्फ एक आत्मा है. हमें ये जानना बहुत जरूरी है. ना हम शरीर है, ना हम कोई अहंकार है, ना हम संस्कार है. वी आर जस्ट प्योर स्पिरिट्स. एंड द मोमेंट वी रियलाइज दैट वी आर प्योर स्पिरिट्स, we will understand that we are actually not wanting anything other than inner peace. And then what happens is that your entire thought process changes. आज क्या होता है? I'll give you a very small example. You know, in a family life, generally there are little bit तू तड़ाक with your husband. You know, generally ये हर जगह होता है. तो अपने हस्बैंड के साथ में हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, कभी बेटी ने कुछ बोल दिया, कभी सासू माँ ने कुछ बोल दिया, whatever. तो पहले क्या होता था? I used to actually react. मैं पहले काफी I was very short tempered. I couldn't take it.
मेरे को मतलब बहुत बात बुरी लग जाती थी एंड आई यूज्ड टू से कि नहीं यार मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, यू नो, दैट वे. बट यू नो नाउ आफ्टर डूइंग सहज योगा आई जस्ट टेक इट लाइक मुझे किसी ने कुछ बोला ही नहीं है. आई हैव नो impression in my face. I said, okay, I must have done something. It's okay, cool. I mean, I just walk out without any impression in my face. और कुछ भी मुझे कुछ बुरा लगा है या कुछ उसका जवाब तुरंत जवाब भी देना है. हाँ, अगर कोई बात बहुत हर्ट कर जाती है, so I just stand in front of Shri Mataji's photograph and say that, Shri Mataji, now it's up to you. You are watching everything. And trust me, every day miracle happens. Every day. After coming into Sahaja Yoga, you know, every day आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है which will actually make you feel more connected towards divine power, more connected. This is something very ये जब तक आप सहयोग में आओगे नहीं तब तक आप इसको experience नहीं कर पाओगे, because Sahaja Yoga is not just reading the books and understanding. It is a total experience. You have to experience Sahaja Yoga. And it is for very simple people like you and me. I was a very simple, ordinary girl until today. I am a mother, I'm a homemaker. I had to give up my job because my daughter was young and I had no one to look after her. So I had to give up my job. And today but I never regret, because today I will say my such a long career, which I was that time in my boom time, my boom period I was. But I took a decision because my priority was my daughter. And today she's made me always very proud for whatever she is doing in her academics. So you know what, आप जिंदगी में कुछ भी करते हो, अगर आप कुछ सही फैसला करते हो जिंदगी का, it really helps you, it really works. And सहज योगा सबसे बड़ी बात है that it makes you complete a balanced person. आज मैं जो कुछ हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से कहूँगी that you know I'm a very stable, very balanced. I know कि मेरे को लाइफ में मेरा अभी मैंने क्या फोकस है, क्या चलना है, क्या होना है. इट इज ऑल इन फ्रंट ऑफ, इट इज ऑल विथ गॉड. हमारे को कुछ सोचने से कुछ मिलने वाला नहीं है. You know, when we have nothing is there. We cannot do anything about future. That is something that we have to understand, because future is not in our hand. And past, which has gone completely, that was also not in our hand. So what is in our hand? In our hand is just the present moment. आज मैं यहाँ बैठकर आपसे जो शेयर कर रही हूँ, this is the moment, this is the present moment I am enjoying. So Sahaja Yoga teaches us to be in present, because past and future, nothing is in our hand. हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. आप बहुत ठंडे दिमाग से सोचना व्यूअर्स, आपको समझ में आएगा कि हमारे हाथ में सच पूछो तो कुछ नहीं है. तो it is basically that when we come into a center point of our life, come in balanced of our life, we actually, you know, when we are taking some very important decisions also, we are very focused. हमारा brain बहुत शांत रहता है. हम सोच अच्छी तरह से सकते हैं कि हाँ भाई हमें इसका अगर मैं ऐसे फैसला लूंगी तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा, दैट वे. प्लस छोटी छोटी चीजें जो होती हैं हमारे साथ में एवरी डे के तरीके से, वो तो खैर सोचने के बाहर है. मैंने अब तो मेरे संग आई हैव नॉट बीन अ वेरी ओल्ड सहयोगिनी. आई विल नॉट से आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग सहज योगा फॉर लॉन्ग इयर्स. आई विल नॉट से दैट. बट अगेन, it is your depth, your connection with the divine, how deep you have been in Sahaja Yoga. It is not the time, the duration that you are doing Sahaja Yoga. It is like how much you're connected with the divine power. That is more important. तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरी जो सवेरा होता है, that day is actually planned by Her Holiness Shri Mataji, who has introduced Sahaja Yoga for us. It's she who decides, and it goes मैंने यूं निकलता है, यूं हर चीज जो सोचो वो ऐसे हो जाती है कि पता नहीं, अरे हमने ये सोचा था ऐसे होगा, कैसे हो गया, अरे तो पता ही नहीं था कैसे हो गया. So it is like this. And I will say a little message. अपर्णा दी, मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को, अगर मैं दे सकती हूँ तो. एक छोटा सा मैसेज दूंगी आप सभी को, ऑल माय फ्रेंड्स,
that, please at least try to experience what is Sahaj Yoga. And trust me, you will come up and say, each one of you will say that Sahaj Yoga, which is said that it is, Sahaj itself says it's a very simple. Sahaj का मतलब ही simple होता है. तो एक simple, effortless way of meditation. This has been introduced by Her Holiness Shri Mataji Nirmala Devi, and we need to just give 20 minutes of our day, 10 minutes in the morning and 10 minutes in the night. That's it. हम अगर खुद को 20 मिनट अगर पूरे दिन भर में दे सकते हैं, and I'm sure we all can, so we are sorted for the day. We are sorted completely. We are balanced. We are done. We don't need to do anything else. It is then the divine power which starts working. हमें कुछ नहीं करना पड़ता है. हम and it will not only वो आपको एक अजीब से एक ऑरा आपके अंदर क्रिएट हो जाता है, एक पॉजिटिवनेस क्रिएट हो जाती है, ताकि आप जिससे किसी और से मिलते भी हो, आप उससे भी जब मिलते हो, उससे भी जब बात करते हो, उसको भी अच्छा लगता है. When you're meeting somebody also, that person also gets a positive vibration from you. So which is very good. Friends, try to do this. Try to come into Sahaj Yoga and experience, because it is all for us. Shri Mataji has given this huge platform. She has opened her heart for us. She has told her all the simple methods of balancing ourselves, coming and doing meditation. She has given all the techniques. Please visit the sites. We have many centers. Now we are doing online sessions also. We have many YouTube channels also. Like we have Learning Sahaj Yoga, everything. We have many ways of, if you actually wish, if you actually desire, you can really come into Sahaj Yoga. And the only thing that you need is a pure desire, nothing else, because it is absolutely priceless. ये बिल्कुल निशुल्क है. Nothing you have to pay for it. Just your desire. That's it. I wish you all the best, all the very best, and have a good life. Have a great day. And thank you, Aparna ji, for giving me this opportunity once again to share it with all of you. I hope and I just pray that my message goes to the viewers, and I can see many more Sahajogi and Sahajoginis, catching our hands. It's like a chain. आपको याद है बचपन में हमें गेम खेलते थे, chain, if you remember. एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे and used to run. So it's like that. I'm putting my hand forward. Please hold my hand. You put your hand, other person will hold your hand. It's like a chain. So we have to walk together. We have to be together. We'll make a beautiful world. Thank you so much. Jai Shri Mataji. Very well said. Very, very beautiful narration of your life also, Jyoti. And इस गाने का भजन की बात कह रही हो, नास्ती, वही वाला है ना? अन्नतम, हाँ जी. I start my day with that song. Imagine the connection, the chain connection that you're talking about. You didn't know about it. And, honestly speaking, for the last 2-3 days, everyone, Sahaj Yogini is sending me this song only. It's my favorite song. This is my favorite song. It's amazing. See, our life is full of miracles. I really also do hope that more and more people come to know and enjoy that divine bliss, the bliss that we have always been reading about, such anand that we have just read about. Okay, Jyoti, thank you very much, and we will again get together because I have some frequently asked questions. There's a series I have started recently. Okay. And because you conduct a lot of public programs, all your public programs are actually my SahajYogaBengal.com. You must be aware of that. Yes. So since you face public and you are also taking online sessions, so you must be facing a lot of different questions. So we want to ask those questions so that more and more people. कुछ लोगों को तुम्हारे साथ तुम्हारे लाइव प्रेजेंटेशन का मिलता है अच्छा गुड opportunity, but not everyone is getting. So we want to take it to everyone. ठीक है, तो we will meet on that also. With this note, bye bye. Jai Shri Mataji. Thank you very much. Thank you.